रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज रविवार का दिन है और समय है एक बार फिर से आपको नए मेहमानों से मिलवाने का और डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक पर बात करने का। आज बेहद खास प्रोग्राम है और आज हम बात करेंगे एक नई ऐप के बारे में जो हम सबकी जिंदगी को इंडिपेंडेंट बना देगी। तो इस शो को आप एंड तक सुने, समझे और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल लेवल सॉल्यूशन की। अगर आप ऑफिस में होते हैं तो बहुत बार आपको फाइल्स को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम आती होगी। अगर आप हाउस मेकर हैं तो आप किचन में रखे हुए सामान को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम फेस करते होंगे। और बहुत बार किस कपड़े के साथ कौन सा कपड़ा मैच करेगा इसको जानने में भी हमें प्रॉब्लम आती है। तो इन सभी चीजों का जो सोल्यूशन है वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। स्पेसफेल्ट नाम की ये ऐप है। अभी ये एंड्रॉइड पर अवेलेबल है और ये पूरी तरह से फ्री है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक इसके साथ बुकलेट दी जाएगी, वो एक टैग की फॉर्म में होगी। वो टैग को आप जिस भी चीज को आपने रिकॉग्नाइज करना है उसके ऊपर लगाएंगे। ऐप की मदद से अपनी आवाज में या तो रिकॉर्ड कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं और फिर जब भी आप चाहें उस चीज को पहचानना अपने मोबाइल ऐप से उसको स्कैन करेंगे और वो आपको बता देगी। इसमें बहुत सारी खास बातें हैं। To talk about it, we have two special guests. We have Aishwarya ji. She's working with LV Prasad Institute. She is rehab counselor there. Aishwarya ma'am, welcome. Thank you, Danish ji. Thank you so much. Glad to be here. And we have Mr. Vivian, who is CEO of Grailmaker Innovations Private Limited. So welcome. Hi Danish ji, and hi all RADIOUDAAN listeners. Thanks for having us here. So Vivian ji, please tell us a bit about yourself. So I'm a founder of a startup called Grailmaker Innovations. So it's based in Hyderabad. We make assistive technology solutions for people with disabilities. I come from an engineering background, but I have been a volunteer for people with visual impairment for the last 5 years in Hyderabad. Especially at LV Prasad Eye Institute, where Aishwarya is from. And while speaking to many of my visually impaired friends, I had the opportunity to learn about their problems, their needs, and that's when we got this idea for this Spacefelt. Spacefelt, okay, that's great. Aishwarya ji, अपने बारे में हमें थोड़ा बताएं। थैंक यू दिनेश जी। मेरा नाम जैसे आप सब जानते हैं ऐश्वर्या और मैं एक रिहैब काउंसलर हूँ और मेरे लाइक प्रोफेशन में आई हेल्प आउट जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनको मैं हेल्प आउट करती हूँ हेल्पलाइन सर्विसेज के द्वारा। सो एंड मेरा मुलाकात विवियन जी से तभी हुआ था जब ये यहाँ पे एलवी प्रसाद में पहले काम करने आए थे। तो तभी ये जानना चाह रहे थे कि विजुअली इम्पेयर्ड पीपल उनके चैलेंजेस क्या क्या होते। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ग्रेट। सो विवियन जी ने एक टेक्नोलॉजी तैयार की है, जैसा हम बात करें डिजिटल लेबलिंग सॉल्यूशन। Vivian ji, when we talk about this app, I want to understand. You might have spoken to many visually impaired. So I want to know what are the challenges they have discussed with you and when did this idea actually came in your mind? When this idea clicked to your mind, were you aware of braille levels or not? Right, Danish. So like with many ideas, this also came up during a conversation. In fact, once I was having a conversation with Aishwarya. So she's an tactile artist. She makes beautiful paintings for everyone to enjoy. It's a tactile painting basically. So she does most of her work independently. She has visual impairment, but 90% of the work she does by herself. Once the only time she needs help is like finding the colors. There are like set of paints near her, but she has to always take a help of a sighted person to know
which color is what and things like that. So once she asked me, can we have a solution which can help her identify these colors? And then I asked her, say, okay, just only about the colors, or what? Like, what about your other things? How do you identify the things in your kitchen? And since she's working in an office, she handles so many documents and folders. So how she's able to identify without taking another person's help? And as we explored the existing solution, braille labels were one. But then I understood that in India, the braille literacy rate is really low. Only 1% of people with visual impairment can read braille. So that was a shocking news, because then what about the remaining people? How do they label their everyday items? And we also explore some other technologies which use near field communication or RFID based technologies. But the problem is they are not affordable for many. It starts like 3,500 rupees or 4,000. And we found out that not many, even though they might be interested, but still they can't afford those technologies. So that's when we thought, like, why can't we use just the regular QR code labels and make a labeling solution out of it. That's when it started. So it started actually for one user, but then we quickly found out that many people are in need of this kind of solution, and they can use it for their own, the use case depends on the people. For example, if an office goer is going to use these labels, they are going to put it on their folders. So a homemaker, they can use it on the kitchen containers and things like that. And if there is a school-going student and they use tactile maps or tactile diagrams, then these labels can be used to describe those materials as well. So this solution can be used by all age groups, and all you need is just a smartphone with you and a set of space-filled labels. So with this, you can basically label anything you want. Right. Vivian ji, our listeners will be curious to know how this application works. Okay, so basically Spacefelt can be used for your personal use, and also now we are piloting it for public accessibility, which I'll talk a bit later. But for your personal use, first of all, Spacefelt is an app and a label combination. So the app is available for download on a Play Store right now. So you just have to type SPACEFELT, Spacefelt, and you can find it there. So the app is free to download. So you can just download and register. You just put your phone number and the login. Then it asks for your name and email ID, and you give that, and then you are registered. The second part is then you use these specially made QR labels, which is available in the form of a booklet. By booklet, you can imagine size of your checkbook, the bank checkbook. It will be of that size, and it has like 6 pages in it. And this booklet contains 108 labels. So basically, you can label 108 items with just one booklet. And these labels are almost 1 inch into 1 inch size. So square labels are there. All you have to do is you just have to peel one of these labels and stick it on whichever object you want to identify later. For example, you might put it on, say, a sauce bottle or a soup packet or your document, whichever you want to. And then you open the app. In the app, you find the Start Scanner button. Okay. So when you open that button, your camera gets activated, and all you have to do is just show your camera before this label. So it need not be very accurate or something, it need not focus. So just make sure that the camera sees this label, and immediately it will identify it. And it will say a new label has been detected. So the next step is, now you get 2 options. Either you can record what that object is with your voice, or you can type it out. First time, you might take the help of a sighted person to do it. So once you know what object is that, you can use your voice to record it, say this document so-and-so, and that's it, you're done. So later on, whenever you want to identify it, it can be many, many days later also. So you just again take this app, open this app, open the scanner, and when you show the camera in front of this label, it's going to now play back whatever you have recorded it earlier. So in case you have typed out the name of that object, your talkback feature, it's going to read out that name. So this works very seamlessly with Android's talkback.
Before going to Aishwarya ji, Vivian ji, I want to know a couple of things. A, would you send booklet by courier? Right. Booklet will be physical, right? And B, what is the cost of this booklet? Right. So the app itself is free to download. So there's no cost for the app. But for these booklets, it is priced at 525 rupees, including GST. And on top of it, there will be the postal charges depending on which place you're ordering from. Right. How many people have purchased the subscription of this application till now? So we have been piloting this for a while, Danish ji, and only like a couple of weeks back we launched it officially. So right now we have like more than 50 users who are already using it, and they are finding it helpful. And also, I think I missed adding one more thing here. I told you about this booklet, right? Which has 108 labels. So this you can use it for most of your items. It is like waterproof labels made of PVC material. So you can use it even in your kitchen. You need not worry much about the moisture or the oil, things like that. But you can't use them for your clothes, right? Because this is another challenge many of my visually impaired friends face. That is, every morning to pair the right shirt with the right matching pant, or especially for women, there are like so many accessories which they find it hard to identify, independently. So for that purpose, we also have these labels in a textile format. So you get a roll of like 25 labels. So it is washable and ironable material. All you have to do is give it to a tailor or your friend. They can just cut it into pieces. There are like 25 in a roll, and you can stitch it to your clothes. So wherever you want to. For example, in shirt, it can be behind the collar, or it's up to you wherever you want to stitch it. And with the same app, you can use it. And this 25 cloth labels also cost 525 rupees. And again, we will be shipping it to post. Right, great. ऐश्वर्या जी, आपने यूज किया तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, मैं यूज करती हूँ दिनेश जी। लाइक अभी पहले तो मैं अपने पेंट्स के लिए यूज करती हूँ। जैसे कि अभी जो ब्रेल लेबल्स है, मैं ब्रेल उतना अच्छे से पढ़ नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मुझे ब्रेल यूज़ करना भी उतना अच्छा नहीं लगता है। टाइपिंग तो अलग है, बट मैं अपने टैक्टाइल पेंटिंग्स के लिए अभी एग्जांपल रेड कलर है, तो रेड में डिफरेंट शेड्स भी होते हैं। सो मैं रिकॉर्ड करके रखती हूँ, ये रेड यूएस कलर का फ्लैग का रेड है और मैं ये सनसेट के लिए यूज़ कर सकती हूँ। सो मैं कस्टमाइज कर सकती हूँ कि मुझे कैसे रिकॉर्डिंग चाहिए, वो एक बात है। और दूसरा एरिया मैं यूज़ करती हूँ, मैं ऑफिस में 2-3 प्रोजेक्ट्स हैंडल करती हूँ, तो उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ फोल्डर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसमें होता है यूटिलिटी सर्टिफिकेट, वाउचर्स। और हमेशा क्या होता है, लाइक जब भी मुझे वो यूटिलिटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, आई वुड नीड, मतलब पेपर्स को देख के उसमें कितना वाउचर, कितना बिल है, वो पूरा एक्सेल शीट में डालना पड़ता है। बट एवरी टाइम कोई साइटेड पर्सन ज़रूरी होता है कि उसमें कितना बिल कितना है, डेट कितना है। तो मैं क्या करने लगी कि ये स्पेसफेल्ट टैग्स ये पेपर्स के ऊपर चिपकाती हूँ, और जो की इन्फॉर्मेशन है, लाइक जैसे कि मैंने बताया बिल नंबर, डेट और कितना अमाउंट है, ये पूरा मैं रिकॉर्ड करके रख देती हूँ। फिर जब मुझे चाहिए होता है मैं स्कैन कर लेती हूँ और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है फटाक से। और कभी कभी लाइक अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकती हूँ दिनेश जी। मेरे पास अभी एक्चुअली फ़िलहाल ऐप है, मैं बस अभी रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कितना सिंपल है इसको यूज़ करना है। बिल्कुल कीजिए। तो मेरे पास अभी मेरा ऐप ओपन है, और मैं अभी एक टैग लेके एक बॉटल के ऊपर चिपका, मुझे पता है ये बॉटल कौन सा बॉटल है, मतलब ये ग्रीन चिली सॉस का बॉटल है, मुझे बताया गया था। तो अभी मैंने चिपका दिया बॉटल के ऊपर, एंड मैं स्कैन कर रही हूँ ये ऐप लेके। तो उसने डिटेक्ट कर दिया और मेरे को ऑप्शंस दे रहा है रिकॉर्ड टैग, और मैं उसमें रिकॉर्ड करती हूँ। चिंग्स ग्रीन चिली सॉस, तो ये रिकॉर्ड हो गया। और मैं
इसको जस्ट स्कैन करके देखती हूँ फिर से। तो बस हो गया, लाइक यू नो हार्डली फ्यू सेकंड्स में वो रिकॉर्ड हो गया दिनेश जी। और बेस्ट पार्ट मुझे इसका ये लगा कि इसमें इंटरनेट का ज़रूरी नहीं है, और मैं ऐप्स अलग दूसरे ऐप्स भी यूज़ करती हूँ जो असिस्टिव ऐप्स है। उसमें क्या होता है कहीं जगह स्पेशली हमारे ऑफिस में इंटरनेट उतना बहुत वीक है, तो वहाँ पे इंटरनेट के लिए लाइक रिस्पॉन्स के लिए बहुत देर वेट करना पड़ता है, कभी कभी एक्यूरेट भी नहीं रहता है। तो इंटरनेट के बिना ये काम करते, सो इन रिस्पॉन्स भी बहुत इंस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार मैं अभी देखी हूँ लाइक कहीं मेरे दोस्त है जो वो लोग अभी किचन में यूज़ करते हैं, जैसे अभी मैंने ये सॉस बॉटल रिकॉर्ड किया, ऐसे सेम सॉस बॉटल्स रहने से यूज़फुल होता है। या तो कुछ सूप पैकेट्स या मसाले के पैकेट्स या कपड़े भी, जैसे विवियन जी ने बताया, कपड़े मैच करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाला था कि ये क्या इसके लिए इंटरनेट की जरूरत है, तो आपने उसको ऑलरेडी कवर कर दिया। विवियन जी, यू माइट हैव डन thorough research on this project. I want to understand from you how this technology would benefit those blinds who resides in rural area. Even today they don't have mobile phones. So how would they use this technology? You're right, Danish. Actually, learning Braille, I think, is also very important. But one thing is, as I said earlier, the percentage, the literacy rate is really low. That is one of the reasons why we were finding an alternative solution. And when it comes to mobile phone penetration, you might know, like, it is fast growing. Already in the country, it is about 54% penetration. And one thing which I found is that many visually impaired people nowadays are getting a smartphone for various things, especially for the audiobooks and things like that. So many are actually getting it. But maybe in the villages, it's going to take a while to reach there. But that's why we are just starting in the cities right now. But we are sure that in the coming years, mobile phone is going to reach most of our population. First of all, let me frankly admit, you have resolved one of the biggest problem of visually impaired community. But at the same time, I noticed one problem with this technology. Whenever you want to use this technology, you need to carry your mobile phone along with you. How would you respond to this question? Right. Right. So something to add here, like if you see the alternative solutions, like say something which is which people use with RFID kind of technologies, the problem there is that you need to carry one more device, and besides your mobile phone, you'll be needing another device to scan these things and record these things. You know, so that makes you to carry like more number of devices, maintaining them, charging them. But when it comes to mobile phone, you're already using it for your normal calls and WhatsApp and things like that. So we thought, like, why not make use of the same device instead of you carrying one more thing. But you're right. To use this, definitely you need your mobile phone. But nowadays, you know what, people even carry the mobile phones to their bathrooms. You know, so that's how it has become. It has become like a part of our body for many people, at least. So I think, so it shouldn't be much of a hassle here. लिसनर्स, एक बार मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं कि ये एक डिजिटल लेबलिंग सॉल्यूशन है। आपको आपके फोन पर एक ऐप इंस्टॉल करनी है। आप 525 रुपीज में एक बुकलेट खरीदेंगे जिसमें आपको टैग्स दिए जाएंगे, 100+ टैग्स। उन टैग्स को आपने जिस चीज को आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं उसके ऊपर चिपकाना है और फिर अपने फोन से एक बार स्कैन करके रिकॉर्ड कर देना है कि वो क्या चीज है। अगर आपको मालूम है वो क्या चीज है तो आप खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है वो कौन सी चीज है तो आप किसी की हेल्प लेके वन टाइम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर जब आपका दिल चाहे आप स्कैन करके देख सकते हैं कि आपने किस चीज को टैग किया, ये कौन सी चीज है। तो किचन में जब भी हमें दालें पहचाननी होती है, जब मसाले पहचानने होते हैं तो उसमें काफी दिक्कत आती है, कपड़ों में काफी दिक्कत आती है, बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे ऑफिस की बात की। तो इट इज गोइंग टू बी ए बोन फॉर ऑल ऑफ अस। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। एक चीज जो हम सभी को अप्रिशिएट करनी चाहिए वो है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत चीप है एज कम्पेयर टू other things. So you said we can also recognize public places with the help of this application. So what are the plans and when you are going to launch that version of this application?
Right. So for the public accessibility, you know very well. So that is a real challenge for many visually impaired people, because people want to travel independently, more on these places independently. But as of today, especially in a developing country like India, it is not that easy. It's not because even if you take Braille, still even that is not available in all these places, right? And also not all these places have these tactile tiles. So we are in the very beginning stages. So that's when we found out like this same solution, which you can use it for your personal things, can be also used for public accessibility. So what the difference here is that in this personal version, you are the person who is going to label these things. You are the person who is going to put these labels. You are the one who is going to record it and then hear it back later. But when it comes to public things, the organization or the institute which wants to make their place accessible, so they would be doing it on behalf of the users. So when they contact our team, we'll be going there, putting these labels at the right places, and we will be recording what is what. And the users, they just have to download this app, install it, and then they need not purchase anything. So they simply have to download just the package of that place. So for instance, in the app itself, you will find a button called public accessibility. So accessible places, sorry. So once you open that, you will find a list of places which has been made accessible by Spacefelt. As of today, it is in the pilot stage. There is only one place listed there, which is LV Prasad Eye Institute in Hyderabad. So whoever wants to explore this, whoever comes to Hyderabad, we invite them, we welcome them to visit LV Prasad Rehabilitation Center, and they can try this out. All they have to do is, before coming to the place, they can find whichever place has been made accessible in the app itself, and then download that package. So why download the package means, like we don't want internet to be a problem. So once you download the package, it hardly takes a few seconds or minutes, depending on how much internet speed you have. So that's the only time you need internet. So once you reach the place, you can start scanning these labels. For example, right now at LV Prasad, what we have done is we have put these labels at every door, especially above the handle, above the doorknob. You know, because we are also trying to create a standard where you can expect to find these labels. For example, there are like so many beautiful pictures and paintings at the hospital. So each of these frames will have these labels stuck to the bottom left corner of the frame. You know, so there is a standard. And also, very importantly, even inside the washrooms we have, because usually when my visually impaired friends ask me where is the restroom, I can escort them to the door, you know. But afterwards, after going inside, they should know the layout of the place, especially if it is a public washroom. You might not know how many toilets are there inside, whether it's Western or Indian, where is the wash basin, where is the dustbin. So all this information will be on the label just behind the door. So once you open the door, you go inside, and behind the door, just above the doorknob, we have put these labels, and they are all pre-recorded. All you have to do is take your phone, and then when you scan it just once, very quickly it tells you the entire layout of the place. So this is, we are the very beginning stages right now. It is being piloted, but we really want to take this to all the places, like restaurants, banks, especially the government offices, because even for sighted person, these places are like kind of a bit chaotic. So you don't know which department is where, and how many steps you need to take to navigate to these places. So you can imagine in the very near future, we are talking to various organizations and restaurants to make their places accessible. When that happens, then you can expect to find more number of places listed in the app, so that people can move around independently in these places. Yeah. So, is the price same for the organization and individuals, or price will be different? For the organization, it's going to be different. So it differs from case to case, because it depends on many factors, like how many labels are we going to put, and how long it's going to take us for us to record. Because
we definitely, the organization also need help from experts from our team who can actually describe it in a much useful way than leaving it entirely to the organization. And also these labels need to be maintained over a period of time. So depending on all these factors, we will discuss with the organization and arrive at cost. ऐश्वर्या जी, एलवी प्रशांत में तो लोग आए होंगे, तो काफी चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि हमें ये पहले तो बात ये है कि पता होना चाहिए कि इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ये लेबल कहाँ पे लगे हुए हैं और उनके पास ऐप होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल यूज के लिए तो ये काफी सिंपल लगती है, लेकिन जब हम पब्लिक प्लेसेस की एक्सेसिबिलिटी को लेके बात करते हैं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है कि ये लेवल कहाँ लगा होगा, मुझे कहाँ स्कैन करना है। आप बहुत भीड़ वाले अगर वॉशरूम में जाते हो तो इतना टाइम आपके पास नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, तो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, बट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द हाउस होल्ड एक्टिविटीज आई थिंक इट्स वंडरफुल. इट विल बी वंडरफुल फॉर द पब्लिक प्लेसेस, बट दैट पीपल्स एक्सपीरियंस विल टेल. तो जब एलवी प्रसाद में लोग आते हैं और जब इस टेक्नोलॉजी को आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, बता रहे हो, तो यूज करने के बाद उनका क्या फीडबैक रहता है? ज़रूर दिनेश जी, जो अभी मैं पहले आपके क्वेश्चन को आंसर करती हूँ, जो उनको कैसे मालूम पड़ता है कहाँ ढूंढे टैग्स के लिए। तो पहले तो ये है कि जब आप पैकेज डाउनलोड करते हैं तो हम एक डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि पहले उनको एक ऑडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाए, वो घर में भी हो या जब डाउनलोड करते हैं उनको एक ऑडियो डिस्क्रिप्शन या टेक्स्ट मिल जाए जहाँ पे उनको डिस्क्रिप्शन मिले कि ये टैग्स कहाँ पे प्लेस होगा। पहले तो पूरा ओवरव्यू देते हैं, ये लेआउट है, जैसे एग्जांपल रिहैब डिपार्टमेंट एलवी प्रसाद में ग्राउंड फ्लोर में है, तो एंट्री के बाद अगर आप 10 कदम लेंगे तो रिसेप्शन रहेगा, रिसेप्शन के पास वो टेबल पे आपको टैग मिल जाएगा। तो अगर आपको एक टैग मिल जाता है तो वहां से दूसरे टैग्स ये कनेक्टेड है, मतलब वो बताएगा कि यहाँ से अगर आप 20 कदम लेंगे तो आपको लेफ्ट साइड फ्रेम में आपको दूसरा टैग मिल जाएगा। तो ऐसे हम भी ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हम कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस से जो इंफॉर्मेशन आता है वील हैव टू इनकॉर्पोरेट इट लेटर। तो आई बात यूज़र एक्सपीरियंसेस की, जिससे मैं अभी एक दूसरा दिन एक वर्कशॉप हुआ था, तो वहाँ हमारा एक क्लाइंट जुबैर बोल रहा था, उनको लो विजन है और वो इंडिपेंडेंटली आते हैं जाते हैं, आईटी ट्रेनिंग लेते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग लेते हैं हमारे यहाँ। तो वो हमारे डिपार्टमेंट में बड़े बड़े फ्रेम्स हैं और उसमें फ्रेम्स में कुछ लिखा हुआ रहता है, बट उस फ्रेम को भी हमने एक्सेसिबल बनाया ये स्पेसफेल्ट टैग्स लगा के, और हमने टेस्टिंग के समय उनको वो स्कैन करवाया, उनको बता दिया कि देखो भाई ये लेबल्स ये फ्रेम में बॉटम लेफ्ट फ्रेम में लगा है, आप स्कैन कर लीजिएगा। तो डाउनलोड तो उन्होंने कर लिया, जब उन्होंने स्कैन किया तो उनको पूरा जो फ्रेम में जो डिस्क्रिप्शन है उनको मिला। मतलब वो सोच रहे थे अरे मैम इतना दिन से 20 दिन से मैं आ रहा हूँ, बट इतना दिन मुझे मालूम नहीं था, मुझे लो विजन है, सब कुछ दिखता है रूम कहाँ पे, बट इसमें क्या लिखा है ये मुझे दिखा नहीं था, बट आज मुझे मालूम पड़ा। उसी प्रकार और एक हमारे एक क्लाइंट है स्नेहा गोयल, वो हमें बता रहे थे कि जब वो पब्लिक प्लेसेस जाते हैं उनको वॉशरूम्स का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब लेआउट ऑफ कोर्स बोल देते अच्छा ये वेस्टर्न है, फिर हम लोग अंदर जाके ढूंढना पड़ता है, बट डस्टबिन कहाँ है या टॉयलेट रोल कहाँ है। तो उस दिन मैंने उनको अंदर जाके वो टैग उनको सुनवाया, तो शी वॉज वेरी हैप्पी, इतना यूजफुल है, मतलब नॉट जस्ट द टॉयलेट बट वो जो मेन एरिया जहाँ पे रहता है, हैंड वॉश एरिया रहता है, उसका भी डिस्क्रिप्शन राइट फ्रॉम हैंड ड्रायर कहाँ पे है, टैप कहाँ पे है, सोप कहाँ पे है। सो शी वॉज वेरी हैप्पी विद, सो ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस। एक चीज बताइए, जैसे आपने कहा 5 सेकंड में रिकॉर्डिंग होगी, जब आपने अभी सुनाया तो जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, क्या वो उसके लिए थोड़ा लंबा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई अलग फीचर है? हाउ डज दैट वर्क? सो सेटिंग्स में रिकॉर्डिंग का हम टाइम बदल सकते हैं दिनेश जी, जो तो अभी फिलहाल 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 और 60 सेकेंड्स का टाइम है। तो 1 मिनट इज द मैक्सिमम जो रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट।
So Vivian ji, it's a wonderful technology. How did you manage to keep the price of these booklet so affordable? Right. So one thing which we were very clear from the beginning is that this product has to be. I mean, not only this product, or any product our company makes has to be affordable, because the thing is that so many technologies are available right now. Very sophisticated technology. We can even put a man on Mars. We are in that stage. But it is of no use if a user cannot afford it, right? So we have been very clear about that. One way we reduce the cost is that we develop this app and all these technologies by our team itself. We don't outsource it because it increases the cost. And even this generation of these codes, this printing, thanks to our very friendly partners, we tell it's not just about selling these products. It has to solve a big challenge here. So we try to make our partners also understand the cost behind it, and we try to keep our team lean, and we basically do many things, most of the things by ourselves, and then make it affordable. But at the same time, by saying affordable, it also means this whole endeavor has to be sustainable, right? So it can only happen if more people from the community become the users, give their feedback, and we all develop it together. It's not just one company making a product and giving it to people, but actually we invite a lot of feedback from the users, and because we need to what to say. Not only just the users, even the organizations which want to make their place accessible. It could be government bodies, and we want it to be a collaborative effort to make all these places accessible, both in the public space as well as for your personal use. Great. What are the plans to expand? Because disabled sector is scattered. So sometimes it becomes a challenge to take it to the masses. So what are the plans? Very true, Danishi. That is one obstacle I think all the assistive tech companies face. That is there are like several pockets throughout the country, and the users are kind of dispersed throughout. They don't come under one umbrella where you can reach out to everyone in one go. One thing which we are doing right now is we are conducting workshops both virtually as well as in person. And first we have started in Hyderabad, and later on we have plans to also we went to Delhi to meet some organizations, and next we'll be traveling to Bangalore, Mumbai, and all these first metro cities first, and do workshops there and tell more about this product. So that is one way, and also thanks to you for Radio Udaan for giving us this opportunity. We know so through your channel also we might reach people who might be interested. Yeah, we are starting. We have just started, and there's a long way to go. But we are positive that we'll get enough support from the community as well as from the government agencies to make it possible. Absolutely, yes, because it's a wonderful technology. I must say, it has solved a big problem of the community and made us more independent. We'll invite you in one of our other show where we'll ask you to completely demonstrate for our listeners so they could have a practical knowledge of this app. So soon we will have that show as well. Thank you so much. Yeah, that would be very helpful. I mean, it's one thing to talk and demo virtually, but when you do it physically, when people get a hands-on experience, then they many of the questions are answered. Because one question we often get is, how fast is it? Should I be scanning it for a long time? But when Aishwarya she just demonstrated, you could actually get an idea how fast is it. So these questions all can be answered when we do in-person workshop. Absolutely, yes. So before I have your closing comments, Aishwarya ji and Vivian ji, so tell us if our listeners wants to buy it, what is the way forward? Okay, so they can contact us on WhatsApp or on call. We have a dedicated number for it. I can share that number. It is 85208 18879. I repeat it, 85208
18879. So this is the phone number. You can either contact us through WhatsApp or give a call during the working hours, 9 to 5. But otherwise, you can also mail us at support@spacefelt.com. It's SUPPORT support@ Spacefelt, SPACEFELT.com. We would be very happy to answer any of your questions, or if you want to order these labels, you can directly write to us here. And once we get your address, we'll be shipping it to you. You can pay through your any means, like say mostly UPI or GPay kind of transactions you can do. So that's how we are doing it right now. In the future, the next versions of the app, we are planning to add a facility to directly order from the app itself. So since it's the first version, we are doing it this way. And it's also a very good chance for us to directly connect with the users and get their feedback, because we want to improve it as much as we can, so that's why we want to have a direct connection with the users. Great. Aishwarya ji, क्या final comments रहेंगे, क्या expectation है community से? I think ये बात में तो सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है दिनेश जी. लाइक ओनली एज अ कम्युनिटी व्हेन वी वर्क टुगेदर एंड व्हेन वी टेल पीपल कि हाँ ऐसे कुछ ऐप है एंड लेट्स मेक लाइक एग्जांपल मैं बस बता रही हूँ. लाइक इफ समबडी इज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, तो वहाँ पे अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल नहीं है, तो वन वे टू अप्रोच इज टू गो टू द डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन कमिटी एंड टेल देम अबाउट इट कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इसको चलिए हम हमारे कॉर्पोरेट कंपनीज को एक्सेसिबल बनाए. एंड अनदर एग्जांपल इज अगर कोई इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में या कॉलेज में किसी को इंक्लूजन चाहिए, या डायग्राम्स एक्सप्लेन करने के लिए या तो मैप्स एक्सप्लेन करने के लिए, वहाँ पे अगर ऐसे वाले चीज़ अगर लाए गए तो वी विल बी हैप्पी टू गो देयर एंड डू इट फॉर देम. सो ऐसे अगर कम्युनिटी पूरा वर्क करेगा, एंड आई एम श्योर जैसे व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट इंडिया, तो लाइक असिस्टेड टेक्नोलॉजी में लाइक कंपेयर टू बाहर के कंट्रीज, इंडिया थोड़ा लाइक लगता है कि हाँ थोड़ा पीछा है. बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, अगर ऐसे टेक्नोलॉजी अगर हमारे इंडिया में लाए, वी विल बी ऑन टॉप, आई फील. बिल्कुल. और खास तौर पे मैं कहूँगा, जो आपने कहा था गवर्नमेंट ऑफिसेज में खास तौर पे ये फाइल को पहचानना, तो इट इज एग्जैक्टली अ बोन फॉर देम, तो इट इज अ ग्रेट सॉल्यूशन फॉर देम. एब्सोल्युटली. और हमारे क्लाइंट्स में थोड़े हैं दिनेश जी जिनको गवर्नमेंट जॉब्स है, बट क्योंकि वो डॉक्यूमेंट एक्सेस नहीं कर सकते, उनको बस बिठा देते हैं, अरे ये तो इनको डॉक्यूमेंट्स रहने दे, जस्ट बिठा देंगे, उनको आने दो और सैलरी रहने दो. बट ऐसे लोगों को दिस ऐप पब्लिक एक्सेसिबिलिटी में जो डॉक्यूमेंट्स एक्सेसिबल बनाता है, ऑब्वियसली उनका सेल्फ एस्टीम तो बढ़ाता है, एंड पीपल विल उनको नीचा देखना भी छोड़ देंगे. ओह, दे आर एबल टू डू समथिंग. एब्सोल्युटली, यस. Vivian ji, your closing comments. I'll just share a very quick experience which happened last month. So I said like we went to Delhi to meet the organization. So that we also went to see some other places. I mean, some sightseeing places like Qutub Minar, And when we went there is a description of when it was built and who built it and all this in a board at these places. I also had a visually impaired friend with me, and every time I was explaining just reading out this whole thing. And he told me it would be really good if we can, because even though we are close friends, sometimes, he was feeling bad, like always he was thinking that he's disturbing me all the time. So that's when we were thinking, like, if only we had a Spacefelt labels here, and it has this description has been recorded there. And he would have loved to travel all the entire place by himself. Just here, he would have just waved the phone in front and listen to this description. So besides your everyday use, or like or on the public places, it can also be used in all these art galleries and museums, because these are some of the places which has always been inaccessible, or say not very interesting for people with visual impairment. So now we also have an opportunity there to put these labels, and so it shouldn't be just like your regular work-related stuff, but also these entertainments, because it is also a way to understand things. It's a way to expand your knowledge. So yeah, I just wanted to share this experience with you.
मैं हमेशा अपने शोज में जब भी इस तरह के शो करता हूं तो लिसनर साहब से अपील करता हूं कि जब तक हम खरीदेंगे नहीं, हम कंपनीज को ये रियलाइज नहीं करेंगे कि वी कैन बाय, तब तक हमारे लिए डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर कोई भी इनिशिएटिव आता है तो उसको यूज कीजिए ताकि सबको लगे कि यहाँ भी एक मार्केट है, हमने इनके लिए एक सोल्यूशन लाया है एंड दे आर हैप्पी। तो अब कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, नाउ इट्स योर टर्न, इट्स वेरी अफोर्डेबल, बाय इट, यूज इट, गिव योर फीडबैक, देन ओनली other people would inspire and they would bring more solutions for us. Thank you so much, Vivian ji, Aishwarya ji, for talking to us for this wonderful technology. All the best. Thank you so much, Danish ji, and all Radio Udaan users. Thank you so much for this opportunity. Thank you, Danish ji. Thanks a lot. Thank you, Radio Udaan users. It was great being here. तो लिसनर्स, आज बात की हमने ऐश्वर्या जी और विवियन जी से, जिन्होंने डिजिटल लेबलिंग सॉल्यूशन के बारे में बताया जिसका नाम है स्पेसफेल्ट, SPACEFELT। सिर्फ 525 रुपीस इसका प्राइस है और आप बहुत हद तक डेली रूटीन में इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तो आज ही से बाय करें। फोन नंबर आपके साथ शेयर कर दिया गया है। अगले सप्ताह मिलूंगा किसी और पर्सनालिटी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।